So, alright, guys, hi, how's everyone doing? I'm on my midnight stroll, had my dinner like an hour ago. So, today I wanted to talk to you about just having these thoughts on how our thoughts change our genes. So, I've been reading a very fascinating book called Inheritance, which is on genes, and this is one of the concepts of the book, and it's very simple. It goes like basically like this. जैसे हमने साइंस बुक्स में ही पढ़ा होगा, आई थिंक इट वॉज 10th क्लास का ही था वो चैप्टर, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि सपोज देयर इज अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी वांट टू पिक दैट पेंसिल अप. So what do? Immediately we pick that pencil up, right? We had a thought and we pick that up. तो ब्रेन वाइज ये एक्टिविटी कैसे होती है कि हमने सोचा एंड हमारे न्यूरॉन्स या हमारे जो कॉन्शियस माइंड ने वो सिग्नल फायर अप किया, ठीक है, मतलब मसल वाले सेल्स को बताया कि आपको ये चीज़ कैरी ऑन करनी है, एंड वो मसल फाइबर से फिर वो फिंगर टिप्स पे आया सिग्नल, केमिकल रिएक्शन हुआ, एंड देन वी पिकअप द थिंग. ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे करके होता है. आई एम नॉट यूजिंग एनी टेक्निकल टर्म्स, ठीक है. So this is what happens with our thoughts. Whatever we are doing every day in our lives, it's modifying our genetic code, little by little, small by small. That is why कहते हैं कि जैसे जो अल्कोहलिक लोग होते हैं या फिर जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, जनरली उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जीन्स में फिर पास ऑन हो जाती हैं. इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन एवरी डे, इट गेट्स वायर्ड इन योर सबकॉन्शियस. इट गेट्स वायर्ड टू दैट एक्सटेंट कि आपके सेल्स को याद रहता है कि कैसे एक्ट करना है, कैसे परफॉर्म करना है. ओके, वायरिंग इन दैट सेंस, इट्स ऑल साइंटिफिक. दैट बुक इज रिटन बाय अ साइंटिस्ट. ओके, ही इज अ जेनेसिस्ट. सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन आवर थॉट्स. सपोज एक छोटी सी एक्टिविटी तुम लोग अभी करो कि you take a deep breath and you say to yourself, whatever I am doing in this world, it benefits other people, it empowers other people, it benefits me, it's for the good of other people. Okay, and it makes sense, you have a purpose. When you say such things, automatically you feel this energy, this empowerment, this zest, this zeal that you're doing something right. Okay, एंड क्या क्यों कैसे फील होती है वो? क्योंकि जो हम बोलते हैं चीज़ें, जो हम सोचते हैं, उससे हमें चीज़ें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये तुमने पढ़ा हुआ है. और वही चीज़ें फिर आगे इफ़ेक्ट करती हैं हमें, और वही दुनिया में हमें फिर चीज़ें वैसी एनर्जी हम फैलाते हैं. इससे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने थॉट्स चेंज कर सकते हो, आप अपनी वायरिंग चेंज कर सकते हो. तो जो लोग जैसे कुछ लोग जो प्रिजन में होते हैं, स्पेशली क्रिमिनल्स, तो उनके बच्चे वगैरह ज़रूरी नहीं है वो क्रिमिनल्स बनेंगे, ठीक है. हमारा ऐसा थॉट है कि ये इसके सो एंड सो फादर ने या मदर ने ऐसे काम किया तो ये बच्चा भी वैसे करेगा, ज़रूरी नहीं है. अगर उस बच्चे की थिंकिंग चेंज्ड हो, एंड आई हैव सीन दिस काउंटलेस एग्जाम्पल्स. आई एम एक्चुअली वर्किंग विद अ गाय, ही हैज़ बीन क्लाइंट whose father since 2 years of his age has been in prison, and that guy is a very very successful entrepreneur. He's very positive, he's good, he's generous, he has a loving family, which he never had. So how did that change happen? Because literally, and I've talked to him a couple of times, he always says that he has rewired his brain, he's rewired his subconscious for past 14-15 years, doing same thing everything same day every day. Okay, that is what he does, same thing each and every day. Sorry, that is what he does. जो एक मैंने एक्सरसाइज बताई थी, मनी कम्स easily, frequently and abundantly, that is what he used to do. It's one of those, I picked that up from him. So he's a very positive guy and he has rewired his subconscious. He didn't let his surroundings, his father's disabilities, in the sense mental disabilities, affect him and achieve anything which he didn't want for his life, for his family, for his future. So no matter where you come from, no matter what are your circumstances, you can change it. You can change your situation, you can change anything as long as you change your thoughts. Your thoughts are very important. Where focus goes, energy flows. Okay, this is what Tony Robbins say. So thoughts are the most important thing, and that is the only thing, precisely the only thing which is in your control. Okay, this is the difference between a winner and a loser. A winner always concentrates on winning, or a winner is basically just a loser who stays long enough in the game even after he has lost. Okay, वो तब तक गेम नहीं छोड़ता जब तक वो जीतता नहीं है. Okay, a winner is really just a loser who stays in the game long enough to win.
Always remember that. So develop a winner's attitude, develop a lion's attitude, have patience, and your thoughts are the only thing that matters in this world. It can even change your genes. And if you have crappy thoughts, well, then you'll pass shit to your children. Okay? So I'll see you guys tomorrow. Have a great sleep and a good day tomorrow.